when we talk about the light, spectrum of light, even if you recall your intermediate physics, even your fundamental engineering subjects, we have the two main terms is the spectrum and the wavelength and the energy. So what is a wavelength? Simply light can be characterized in terms of its wavelength. So when we talk about the optical communication, first of all, we should talk about the fundamental and basics of the light. So always when we talk about the light, we can characterize what are the main characteristics of the light energy. Means light to be defined in terms of wavelength, in terms of frequency, in terms of energy. So fundamentally, the main wavelength is the parameter that is used to characterize the light. So analogous to the frequency of the radio signal. कि भाई अगर इसको हम एनालॉजी बनाएं कि भाई ये जो हम बात कर रहे हैं किसी भी रेडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से ही हम इसको रिलेट करें. सो द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज एक्सप्रेस्ड इन द माइक्रोन्स और द नैनोमीटर्स. Now we, as you know, we have the different within the spectrum of light, we have the different regions. Even in your first year chemistry, even physics, you know what is the visible light spectrum. If I ask from anyone कि भाई visible light spectrum कौन सा होता है, I was discussing about this here it is clearly written fiber operating windows. Means there are the different fiber operating windows starting from the 800 nanometers to the 330, then to the 550 nanometers. So there are the three main you can say operating windows or regions. And what is this? This is nothing. What do you mean by 800 nanometer, 300, 1310 or 1550? This is nothing but the wavelength. So the wavelength we are dealing in the optical fiber system region is actually starting from the 800 nanometer to the 550 nanometers. Now here one slide is I just put for you people. Light starting from here in terms of wavelength, you can see in this figure, optical fiber is ahead of that. Optical fiber operating region is starting from 800 nanometer. If you see this figure, where my cursor is moving, but see the visible light region here, clearly it can be shown from almost your 450 to the nearly 700 almost. You can say or 750. So optical fiber is ahead of that. उसके आगे है optical fiber बेटा, same नहीं है. So just for your recall, I will not discuss being a practical teacher in detail. Just for the students who have means forget about the properties of light, simple terms within few lines. I think you have even if I recall your fundamentals, discuss about the two fundamental theory in your first year. Light is a particle or light is a wave. So that's why particle and corpuscular theory and other was a wave theory, Christian Huygens theory. If you recall, कि भाई एक में हम ने थ्योरी पढ़ी थी कि लाइट पार्टिकल है, दूसरी थ्योरी पढ़ी थी कि भाई लाइट इज अ वेव है. इफ यू रिकॉल, हैव यू रिकॉल योर फर्स्ट ईयर फिजिक्स कि भाई सर आइजैक न्यूटन इंट्रोड्यूस द वन थ्योरी. Yes sir. That was the corpuscular. Yes sir. Okay, that good beta. So what is light actually? What is the fundamental definition of the light? That agent, force or action in nature by the operation of which objects are rendered visible or luminous. के भाई लाइट को हम कैसे डिफाइन करें? अगर सिंपली लाइट को सिंपल कहें कि एन एजेंट और फोर्स और एक्शन इन नेचर, नेचर की एक ऐसी मींस ऐसा अमल या ऐसा फोर्स जो व्हाट मेक इट पॉसिबल कि भाई उससे क्या होगा, ऑपरेशन ऑफ विच ऑब्जेक्ट्स आर रेंडर्ड विजिबल और लुमिनस, जिससे आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देख सकेंगे, उसके मींस देयर विल बी द लुमिनस, देयर विल बी द विजिबिलिटी फॉर दैट ऑब्जेक्ट वर्किंग. और सिंपली अगर इस पूरी चीज को और आसान वर्ड्स में, जर्नल वर्ड्स में हम डिफाइन करें लाइट को, कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट कैन प्रोड्यूस अ visual sensation. In simple words, if anyone can ask you कि भाई what is a light? Light is nothing but the electromagnetic radiation by means of which we are able to produce a visual sensation. कि भाई we can see
means we can come in the visible region, we can means have ability to see the objects clearly कि why what is the function of this object, how actually this object is working, चीजों के हम काबिल होंगे उनको देख सकें, उनका काम देख सकें. इज इट क्लियर बेटा? तो जर्नली अगर हम फिजिक्स के हिसाब से अगर टेक्निकली कहें कि बाय एजेंट फोर्स और एक्शन इन नेचर बाय ऑपरेशन ऑफ विच ऑब्जेक्ट्स आर रेंडर विजिबल और luminous. The second is light is nothing but the electromagnetic radiation that can produce a visual sensation. So when we talk about the optical fiber communication, we must know what are the properties of light. You have already studied the propagation of the light, reflection of the light, refraction of the light, interference of the light, diffraction of the light, scattering of the light, absorption of the light. These are all the phenomena that are related with the light. Means simply what is the when we talk about कि भाई light is going to propagate, even I say you कि भाई we are going to conduct one lab on the propagation of the light, means propagation loss, means attenuation loss. When your light energy is going to be propagated, your energy has to be lost. So यहाँ पे हम propagation को define करके भाई matter is not required for the propagation of light. Then the second property is reflection occurs at surface or boundary of a regular medium. Then refraction is simply bending may occur where a change of speed is experienced. For interference, say, what do you mean by interference? Simply where two waves are superimposed on each other, then there is a diffraction, bending around the corners takes place when wave pass through the edges or obstruction. Then scattering of the light. अगर स्केटरिंग ऑफ लाइट को आप हमेशा रिलेट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, स्केटरिंग में क्या होता है, रेगुलर मीडियम में आपकी जो है ना लाइट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती. रिफ्लेक्शन में क्या होता है, अकर्स एट सरफेस ऑफ बाउंड्री ऑफ रेगुलर मीडियम. अगर रेगुलर मीडियम पे आपकी जो है लाइट आके हिट करे तो यहाँ पे आपकी लाइट रिफ्लेक्ट होगी. अगर वही आपका बाउंड्री या मीडियम या सरफेस इरेगुलर मीडियम है तो वहां पे लाइट की स्कैटरिंग का आपको फिनोमेना होगा. देन एब्जॉर्प्शन, चेंज ऑफ लाइट इनटू द हीट एनर्जी, देयर इज अ एब्जॉर्प्शन इफेक्ट. सो दीज आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिटेल यू हैव कवर्ड इनटू योर इंटरमीडिएट फिजिक्स कि भाई प्रोपगेशन ऑफ द लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट. नाउ लाइट हैज टू बी प्रोपगेट, लाइट प्रोपगेट भी होती है, रिफ्लेक्ट भी होती है अगर रेगुलर मीडियम हो. रिफ्रैक्शन होती है जब चेंज ऑफ स्पीड, लाइट स्पीड आपकी चेंज हो जाए. लाइट में इंटरफेरेंस आती है जब लाइट दो वेव एक दूसरे को सुपर इम्पोज करें. सेकंड चीज, जब बेंडिंग हम लास्ट पढ़ेंगे फाइबर ऑप्टिक का, बेंडिंग कहें या डायफ्रैक्शन कहें, क्योंकि वन मैंने आपको ले